Coming. So personally, I'll start with you. Tell us something about सबसे खास बात क्या है? It's the colors and the shape of this. Like, so it's about the alchemy of the love. My collection name. I got inspired with the famous painting The Kiss by the Gustav Klimt. So it's the I have created the whole collection like with the pure love and the pure hard work and like how the alchemists transform the normal metal into the gold and how love transforms the vulnerability into the strength. रकुल जी, good to see you. So good to see you. Bank में मिस हुआ था, बॉम्बे डाइंग में देखने मिला. क्या है खास बात आउटफिट के बारे में? मैंने देखा आपने काफी इनको भी चेयर किया, हाँ. लेके आ रहे थे ऑडियंस को कहा कि इनको चेयर करो. Tell us about all everything. I think it's her first show, right? And when Nishtha came to me, I was very happy to get associated with someone who is new and budding. क्योंकि हम भी कभी न्यू थे, बडिंग थे, एंड यू वांट पीपल टू काइंड ऑफ सपोर्ट यू. सो आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इसीलिए मैं वो चेयर कर रही थी बिकॉज वो थोड़ी सी नर्वस थी. वो अभी भी थोड़ी सी नर्वस है. हाँ, अभी नहीं है, ठीक है. So, अभी शी इज़ फाइन. सो दैट वाज द चेयरिंग पार्ट एंड आई लव हर आउटफिट. आई फील लाइक हर एंटायर कलेक्शन अगर आपने देखा है, इट्स कॉल्ड एल्केमी ऑफ लव, लाइक शी जस्ट सेड. And it's beautiful, it's very girly, it's very feminine, delicate, and it screams of passionate love, the intimacy, the beauty, delicacy, and I think that's what's beautiful about it. अगर हम नकुल जी से बात करें तो कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद है, वेस्टर्न या ट्रेडिशनल? मुझे ड्रेस फॉर द ओकेजन पसंद है. तो कभी वेस्टर्न कभी ट्रेडिशनल. आप किसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है? मैं कंफर्टेबल तो जीन्स और शर्ट में रहती हूँ. अगर आपको डिफाइन करना हो जो आउटफिट आपने कैरी किया तो जब आपने ये कैरी किया और जब रैंप पे चली तो क्या पूरा कम्युनिकेशन हुआ? क्या अगर एक सेंटेंस भी बोलोगे तो क्या होगा? आई थिंक जस्ट एलिगेंट. What about the look? ये आपका हर टाइम का क्वेश्चन हो गया. यू टेल मी. It is looking very good. थैंक यू. क्या जैसा आपने बताया था काफ़ी कुछ आने वाला है, कुछ हिंट देना चाहोगे अपने दर्शकों को? क्या वेल अभी दे दे प्यार दे 2 है इस साल जो रिलीज़ होगी. हम लोग हाल ही में शूटिंग ख़त्म की है ऑलमोस्ट. फिर एक और फिल्म है जो मैंने नीना गुप्ता जी के साथ की है, दैट शुड ऑल्सो बी रिलीजिंग सून. एंड एक और फिल्म है जिसकी मैं शूटिंग कर रही हूँ और एक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. You've been in Hollywood. Yeah, yeah, thank you guys.